Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So, in yesterday's session, again, we saw that there was some recovery in the market. Nifty was up by 46 points, and we have closed at 19,574 level. During the day, IT, pharma, oil and gas, and PSU banks were the sectors where we saw some good amount of buying. While auto and bank Nifty was slightly marginally lower. So, but now if we look at the chart pattern of the Nifty, we believe that Nifty is going to head towards the 19,600 level, which is the immediate resistance, and gradually it should be heading to 19,800 level. Earlier, the base formation was seen as 19,200, which is now shifted to 19,400 level. So, whatever the long positions we are holding, we'll keep 19,400 as the immediate stop loss. So, if 19,400 is broken, then there will be slightly loss of momentum, is what I believe. Directionally, the view is positive. Decline should be viewed as a buying opportunity, and at least for this week, the bias is positive. 19,600 is if that level is taken on, 19,800 should be the upside target. Coming to Bank Nifty was slightly negative, close to 46 points in yesterday's session. The close was 44,532. So as we have been maintaining that Bank Nifty is trading in range 43,500 and 45,000. So we need Bank Nifty to close above 45,000. So as and when we see a breakout above 45,000, then I believe the Bank Nifty will also start to perform, and that will also contribute to the rally. So few stocks within the Bank Nifty, which is positive if this breakout comes, is Axis and IndusInd Bank from the private bank. And anyways, for the last couple of days, the POC Bank is showing the momentum. So POC Bank will definitely be one which will contribute to the rally. Coming to derivatives report, so yesterday, Nifty futures, if we talk about, then there was a long build up to the tune of 0.24%, and the PCI data has jumped from 1.37 to 1.41 ratio. The OI data also suggests 19,600 and 19,700 as the on the put side. So that will be the sorry, on the call side, that will be the resistance, and 19,500 on the put side. So that will be the support. Coming to Bank Nifty, there was a long unwinding in the Bank Nifty to the tune of 3.25%. The PCR data has fallen from 1.16 to 0.91. So there was a decline in put call ratio. The OI data suggests additional in 44,600 and 44,800 strike price. So that will be the resistance, and 44,000 is likely to act as a support. So specifically yesterday, what we observed was there were sectors like oil and gas, PSU banks, and infra. So this were the three sectors where we saw good amount of buying. Even the stocks like Devyani International and Jubilant Food, the stocks which have started to move. I think from the trading point of view, purely there can be a opportunity in these counters. Beside this, Aditya Birla fashion is one trade which we are initiating in the technical report. So we are recommending a ABI buy at the current CMP, which is at 231 till the declines of 228. The stop loss would be 216 and the target would be 268. The time frame for this call is 2 to 3 weeks. So on a decline, definitely I think there will be some on slight correction can be viewed as a buying opportunity in the ABFRL, and 268 should be a target for the next 2 to 3 weeks. So bias is positive. Lastly, the FI data, again they added slight long positions, and the long short ratio for the FI is 52%. So the view from the FIF point of view also remains positive. So that's the technical view. I'll hand over to Bhavesh sir for more research updates. Thank you. Hi, good morning, team. So there is positive news for Dilip Buildcon. So there is a JV of Dilip Buildcon with Patel Engineering, which has received orders worth 1275 crores from Madhya Pradesh Jal Nigam Limited for commissioning, testing, constructing of Narmada Gambhir multi-village water supply scheme. So this is very positive for them, and we have a buy rating with a target price of 410. So that's it from me. Over to you, the retail team. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. Continuing with further update.
Starting with one second. Yeah, starting with Geo Financial Services is going to be removed from NSE on 7th September. So we could see some selling pressure from the index funds on 6th of September as they have to close down their positions from the index and the ETFs. So there could be some selling pressure in the Geo Financial Services. Secondly, Tata Consultancy says the Indian technology major has entered into a multi-year partnership with agriculture and bioenergy company Lantam and Economosync Ferdinand to transform its IT infra and TCA said that they will harmonize the Lantern digital workspace to support hybrid working for all users and transform global service desk to 24 by 7 multilingual support. Vedanta says that it will start its copper operation in Zambia after government decision in the favor of the company. The ownership and management of Konokia copper mines has been returned to the company following a historic decision from the government and Republic of Zambia. KCM is a world-class asset having 16 million tons of contained copper and a copper grade of 2.3%, company said. For Z Entertainment, IDBI Bank has filed an appeal against the NCLT order approving the merger of Z with Culver Max Entertainment, formerly Sony Pictures. The lender has moved to NCLT law and CLAT against the order, and the earlier Mumbai bench of the NCLT on the August and approved the proposed merger, which will create the largest media entity. For Jupiter Wagons has backed an order of 700 crore from the QIP. It has received board approval to raise 700 crore from the QIP, and the funds will raise through the issuance of equity shares of total 700 crore. The company's aim is to bolster its resources on expansion and subsidiary investment in JV and capital adequacy enhancement in various manufacturing plants, it said in a statement. Paytm also gives a Paytm reported 20% YOY growth on its average monthly transactions at 94 million in the July-August period from 79 million in the last year. And it has disbursed loans of 55,117 crores to its lending platform, the company said in a press release. The volumes also increased by 43% YOY to 3 trillion in July-August. Tata Power and Renewable Energy has will set up a 12 megawatt on-site solar project at Tata Motors commercial manufacturing facility in Maharashtra. And TRPL has already signed a power purchase agreement with Tata Motors in this regard. The project will generate 17.5 million units electricity per annum, mitigating over 12,400 tons of CO2. NBCC has signed an MOU with Kerala State Housing Board for development of 18 acres of land parcel in the board of Kochi. The project value would be around 2,000 crores. Union Bank and Bank of Baroda has signed an MOUs with Indian Renewable Energy Development Agency to co-finance renewable energy projects, including both established and emerging RE technologies. Power Grid, the state-run electricity services, has won an interstate transmission project to build and operate and transfer in Rajasthan. That is a boat basis. The transmission will evacuate 20 gigawatt under phase 3 part in REZ, Rajasthan. SDFC MC, the Amaresh Jaina has resigned as the head in marketing of the asset management firm with effect from September 8 due to personal reasons. So that's it from mine. I'll hand over to Shantanu for more updates. या थैंक यू हितेंद्र एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज के हिंदी अपडेट्स के साथ। फर्स्ट अपडेट जो है वो है दिलीप बिल्ड कॉइन पे, जहाँ पे दिलीप बिल्ड कॉइन जो इंजीनियरिंग, उन्होंने पटेल इंजीनियरिंग जेवी से एक ऑर्डर मिला है उनको, जो है वर्थ रुपीज 1,275 करोड़। ये जो ऑर्डर मिला है ये मध्य प्रदेश के जल निगम लिमिटेड से मिला है। ओवरऑल इसका काम होगा कमिश्निंग, टेस्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नर्मदा गंभीर मल्टी विलेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। ये ओवरऑल जो एक ऑर्डर है काफी पॉजिटिव अपडेट है कंपनी के लिए। एंड हमारा एक बाय रेटिंग भी है दिलीप बिल्डकॉइन पे विद टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 410। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की बात करें तो एनबीसीसी में जो है कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है वर्थ रुपीज 2,000 करोड़ फ्रॉम केरला स्टेट हाउसिंग बोर्ड। एक पॉजिटिव अपडेट होगा एनबीसीसी के लिए। टाटा पावर की अगर बात करें तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ पार्टनर किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 12 मेगावाट प्रोजेक्ट सोलर प्रोजेक्ट एट पुणे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सो अगेन एक पॉजिटिव अपडेट होगा टाटा पावर के लिए। वेदांता की अगर बात करें तो जाम्बिया जो है उन्होंने अग्री किया है
कोंकाला कॉपर माइंस रिटर्न करने के लिए वेदांता रिसोर्सेज को, सो वेदांता के लिए एक पॉजिटिव अपडेट होगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो कंपनी का जो लिथियम आयन सेल प्रोजेक्ट है, उन्होंने ₹2000 करोड़ सिक्योर किए हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स, तो एक पॉजिटिव अपडेट होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए। पावर ग्रिड की अगर बात करें तो कंपनी ने एक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट जीता है ऑन बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस। ये जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में है। ओवरऑल एक काफी पॉजिटिव अपडेट होगा पावर ग्रिड के लिए। वेल्सपन इंडिया की अगर बात करें तो कंपनी जो है वो अराउंड ₹3000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए देख रही है इन द इमीडिएट फ्यूचर, सो एक पॉजिटिव अपडेट होगा वेल्सपन इंडिया के स्टॉक प्राइस के लिए। इसी के साथ अगर एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो कंपनी ने एक नया फीचर ऐड किया उनके ऑरम सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पे। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी जो है वो आज निफ्टी 50 से एग्जिट करने वाली है, और इसी के अलावा कुछ और इंडाइसेस से भी उसको एग्जिट कर दिया जाने वाला है। ओवरऑल एग्जिट होगा फ्रॉम 7 सितंबर। एचडीएफसी एएमसी के रिगार्डिंग एक अपडेट है जहाँ पे मिस्टर अमरीश जेना जो है, इन्होंने एज अ हेड मार्केटिंग ऑफ एसेट मैनेजमेंट फर्म रिजाइन किया है विद इफेक्ट फ्रॉम September 8। स्टर्लिंग विल्सन की अगर बात करें तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जो है, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग डाउनग्रेड किया है कंपनी पे टू INDBB फॉर द कंपनीज लॉन्ग टर्म फंड एंड नॉन फंड एक्टिविटीज। ओवरऑल एक नेगेटिव अपडेट होगा स्टर्लिंग विल्सन के लिए। लास्ट अपडेट जो है वो है नजारा टेक पे, जहाँ पे कंपनी जो है अपना अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंसीडर करने वाली है। अगर मार्केट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स ले तो कल अगेन मार्केट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन होता हुआ दिखा था। इनिशियल जो है हाफ में थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ओवरऑल पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, हमारा एक बुलिश बायस मेंटेन रहेगा इंडेक्स पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी 19600 से लेके 19800 तक के मार्क टच कर सकता है। बैंक निफ्टी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, एक ब्रॉडर रेंज में जो है ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम 43,500 टू 45,000। अगर 45,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एंड उसी के साथ हमें एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम इंडेक्स में देखने मिल सकता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे आज पॉजिटिव साइड पे नजर रखी जा सकती है वो है देवयानी इंटरनेशनल, जीएमडीसी एंड सेंचुरी टेक्सटाइल। इसी के साथ अगर एफ आई आईज एंड डी आई एस की बात करें तो कल के सेशन में एफ आई आईज ने 1725.11 करोड़ की सेलिंग की थी, जबकि डी आई एस ने ₹1077.86 करोड़ की बाइंग की थी। फ्यूचर्स डेटा की अगर बात करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप कल के सेशन में देखने मिला वो है सिप्ला, एचसीएल टेक एंड जेके सीमेंट। जबकि कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने मिला है वो है एसबीआई लाइफ, पावर ग्रिड एंड एशियन पेंट्स। So this was all from our end. Thank you for attending the morning con call. Have a good day.